Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start a series of lectures in basic chemistry. I hope you will understand it and enjoy these lectures. The first lecture of this series is mole and its numericals. The first lecture is about mole. What is mole? As we know that the atomic weight of an atom and molecular weight of a molecule, if represented in gram, is called mole. किसी एटम का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो मोल कहलाता है. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. हम जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 एटॉमिक मास यूनिट है. If this 18 atomic mass unit is represented in 18 gram, that will be equal to 1 mole of water. So basically mole is represented by small n, and it is given by the formula mole is equal to given mass in gram divided by atomic mass or molecular mass. Mole को given mass in gram divided by atomic mass or molecular mass. Basically mole is the counting unit to measure the amount of substances. ये मोल का मतलब ये है कि किसी एटम का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करे तो मोल कहलाता है. राइट. Numericals solving related moles. Basically, there are two ways most frequently asking the numericals of mole. That is, find mole. Number two, mole given, but asking the mass of substance or molecular mass. For example, I am presenting here two numericals. Calculate the number of moles of 360 gram glucose, and second is when natural gas burns, carbon dioxide is formed. If 0.25 moles of carbon dioxide is formed, what mass of carbon dioxide is produced? Right. बेसिकली आपको मोल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो तरीकों से पूछे जाएंगे. या तो आपको ये कहा जाएगा कि मोल फाइंड आउट करें. सेकंड इज मोल गिवन होगा लेकिन आपसे मास ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा. सपोज पहले न्यूमेरिकल में आपसे मोल के बारे में पूछा गया है और सेकंड न्यूमेरिकल में आपसे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. वी विल ट्राई दिस न्यूमेरिकल्स इन सिंपल वे. बहुत सारी कीज और बहुत सारे नोट्स में आपको मुख्तलिफ तरीकों से न्यूमेरिकल सोल्व करवाने की कोशिश की गई है. यहाँ पर हम आपको एक ही मेथड देंगे. इसी मेथड के थ्रू जितने भी मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं आप इजीली सोल्व कर सकते हैं. Calculate the number of moles of 360 gram glucose. As we already know the formula of mole, we have to properly write the data to solve numerical related mole for best solution. हमें अच्छी तरह से डेटा सेट करना होगा मोल के न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 360 ग्राम ग्लूकोज. इस न्यूमेरिकल में मोल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. तो मास ऑफ ग्लूकोज जो कि गिवन है 360 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें खुद फाइंड आउट करना है. एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. And we can easily find out the molecular mass of glucose. Molecular atomic mass of carbon is 12, that multiplies 6. That will sum up with hydrogen H12. 1 multiply 12 plus 16 multiply 6. Oxygen का atomic mass है 16, that is multiply with 6 atoms of oxygen. So overall इसको sum up करेंगे तो 180 atomic mass unit होगा. और हम जानते हैं we know that mole is equal to given mass in gram divided by molecular mass of glucose. And we already know in this question the given mass in gram is 360 gram divided by molecular mass. We have already find out that is 180 atomic mass unit. So if we divide 360 with 180, that is equal to 2 moles of glucose. ये वही क्वेश्चन है जिसमें मोल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जो आप इजीली इसी फार्मूले के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. The second type of questions they will most frequently asking is, for example, when natural gas burns, carbon dioxide is produced.
if 0.25 moles of carbon dioxide is formed, what mass of carbon dioxide is produced? This is a numerical related combustion reactions, right? First of all, we will try to write the data, that is 0.25 moles of carbon dioxide, and अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो इसके ज़रिए 0.25 मोल्स में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल होगी. Mole is already given, that is 0.25. Mass of carbon dioxide we have to find out. Molecular mass of carbon dioxide we can find out, that is carbon is 12 plus uh, oxygen is 16 multiplied 2, overall 44 atomic mass unit, that is molecular mass of carbon dioxide. Now, we are going towards solution. We know that the mole is equal to mass in gram of carbon dioxide divided by molecular mass of carbon dioxide. So, mole is already given, that is 0.25 is equal to mass, we need to find out, and molecular mass, that is 44, we have already find out in data. So mass of carbon dioxide is equal to, now through cross multiplication, mass of carbon dioxide is equal to 0.25 multiply 44, that is equal to 11 gram of carbon dioxide. So इसी तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इस सवाल में आपको मोल दिया गया है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, हमने मास की वैल्यू, मोल की वैल्यू पुट करनी है, मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट करके यहाँ इसकी वैल्यू पुट किया जो कि 44 है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नतीजे में 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल हुआ. सो इन दो तरीक़ों से मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओ लेवल, नाइन्थ एंड फर्स्ट ईयर में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस. आप इसी फार्मूले के थ्रू इजीली कर सकते हैं. So now I am asking question. You have to solve the given numerical and answer comment in this video. अगर आपको ये दोनों मेथड्स समझ में आ गए हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के, तो आप ये न्यूमेरिकल आपने खुद सोल्व करना है और वीडियो के कमेंट में आपने इसका आंसर और डिटेल्स देनी है. Oxygen is converted to ozone during thunderstorm. Calculate the mass of ozone if 9.05 moles of ozone is formed in an atom in a storm. अगर आपके पास 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन एक स्टोन में बन जाए तो इसमें इसका मास ऑफ ओजोन आपने फाइंड आउट करना है. थैंक यू वेरी मच.